हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है OWS वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और ये है हमारा डेली डोज नंबर 15। इससे पहले हम 14 वीडियोस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही हम ईडियम फ्रेजेस OWS और सिनोनिम एंटोनिम्स वोकैब सब कवर कर रहे हैं। ये सब कुछ हम ब्लैक बुक से कवर कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उन्हें देख सकते हैं। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम मीन्स शिकार की खोज में घूमने वाला। अ पर्सन हु मूव्स स्टीडली अबाउट और loiters near a place with a view of committing a crime. Loiter means आवारा। नेक्स्ट इज सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक, one who studies election trends by means of opinion polls. Psephology, चुनाव विश्लेषण, the study of how people vote in elections is known as psephology. इसमें p silent है। नेक्स्ट इज pseudonymy, उपनाम, a fictitious name especially one assumed by an author is known as pseudonymy. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञानी, a scientist trained in psychology is known as psychologist. Next is psychology, मनोविज्ञान. The scientific study of the mind and how it influences behavior is called psychology. Next is punctilious. Punctilious means अति शिष्टाचारी. Careful in performing duties is called punctilious. आप पंच पंच ना पंच बहुत ज़्यादा पंच होता है अपनी चीज़ों में, पंचुअल उस वर्ड से बना है पंचिलियस। नेक्स्ट इज पंजेंट. पंजेंट मीन्स तीखा. हैविंग अ शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल इज कॉल्ड पंजेंट. नेक्स्ट इज पंटर. पंटर मीन्स ज्वारी. अ पर्सन हु गैम्बल्स, प्लेसेस अ बेट और मेक्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट कॉल्ड पंटर. नेक्स्ट इज पर. पर मीन्स म्याऊं करना या गुरगुराना. मेक अ लो continuous vibratory sound expressing containment. containment means होता है संतोष, प्यार of a cat. जब आपने देखा होगा कि जो पेट होते हैं अगर वो बहुत प्यार से बिहेव करें तो उसे बहुत प्यारी सी साउंड निकालते हैं, म्याऊं म्याऊं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पर. नेक्स्ट इज परस्यू. परस्यू मीन्स पीछे लगे रहना, जैसे किसी गोल के पीछे लगे रहना, टू रन आफ्टर. नेक्स्ट इज putrefy, सड़ना, decay of organic matter producing a fetid smell. Fetid means unpleasant, जो कि अच्छी नहीं लगती, जो स्मेल जो कि मतलब जिस स्मेल से मूड खराब हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड fetid. नेक्स्ट इज पायरोमेनिया, आग लगाने का पागलपन. एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स इज कॉल्ड पायरोमेनिया. नेक्स्ट इज क्वैक. क्वैक मीन्स बतख की आवाज. Sound made by ducks is called quack. Quadrangle, चतुर्भुजाकार. A court or open space usually rectangular and enclosed by a building is called quadrangle. Next is quadruped, चौपाया. Any creature with 4 feet is called quadruped. Next is quash. Quash means रद्द करना. Reject as invalid, especially by legal procedure, is called quash. Next is quaver, थरथराना या कांपना. A shake or tremble in person's voice is called quaver. Like किसी किसी को स्टेज फियर होता है तो उसकी वॉइस क्या होती है, थोड़ी सी कांपती है, तो दैट इज कॉल्ड quaver. नेक्स्ट इज quest, खोज. सर्च फॉर समथिंग इज कॉल्ड quest. नेक्स्ट इज quill, पंख की कलम. A feather used as a pen is called quill. Next is quinquennial, पंचवार्षिक. An event which happens once in 5 years is called quinquennial. Like elections. Elections 5 years में एक बार होते हैं, तो elections को हम क्या बोल सकते हैं? quinquennial. Next is quite, पूर्ण रूप से. To the utmost or most absolute extent or degree is called quite. Desertic. Desertic means खाली,
या अवास्तविक, a person preoccupied with an unrealistically optimistic approach to life is called quixotic. Next is quorum. Quorum means न्यूनतम उपस्थिति, मिनिमम पीपुल नीडेड फॉर अ मीटिंग। अगर किसी मीटिंग के लिए एक कोरम फिक्स होता है कि इतने पीपल होने ही चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड कोरम। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में मीटिंग तभी हो सकती है जब 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट हो, तो वो क्या है, पार्लियामेंट का कोरम है। रिकाउंटर इज कॉल्ड मजेदार कहानियां सुनाने वाला, अ पर्सन हु इज गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग एंड assuming way is called raconteur. Next is radiation, विकिरण. The act of spreading outward from a central source is called radiation. Next is radical, उग्र सुधारवादी, a person who advocates complete political or social change is called radical. Radiologist, विकिरण चिकित्सक, medical doctors who specialize in diagnosing disease using X-ray, CT scan, and ultrasound is called radiologist. Radiology, विकिरण चिकित्सा विज्ञान, the science dealing with X-rays and other high energy radiation, especially for the diagnosis and treatment of disease, is called radiology. Rambling, rambling means बक बक करना, कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो बोलते हैं ना बहुत बक बक कर रहा है, तो that is called rambling. Speaking at length about trivial things. Next is ramification, परिणाम. The possible result of an action is called ramification. Rancid, basi. Having stale taste or smell is called rancid. Rancorous, shatrutaपूर्ण. Characterized by bitterness or resentment is called rancorous. Ransom, फिरौती. To free prisoner on payment is called ransom. Rapacious, अति लोभी, greedy for money is called rapacious. Next is rebate. Rebate means होता है छूट. Reduction in tax or debt is called rebate. Next is rebel. Rebel means विद्रोही. Opposing or taking arms against a government or ruler is called rebel. Recant, मुकर जाना. To take back, withdraw or renounce is called recant. Receptacle, patra. A hollow object used to contain something is called receptacle. यानी कि मतलब कोई बर्तन, तो उसको क्या बोलेंगे, a hollow object used to contain something is called receptacle. Recipient means प्राप्तकर्ता. One who receives something is called recipient. Reciprocate, लेन देन करना या फिर विनिमय करना. Give and receive mutually is called reciprocate. Next is recluse. Recluse means होता है वैरागी. A person who withdraws from the world to live in seclusion and often in solitude is called recluse. आजकल आईआईटी वाले बाबा बड़े फेमस हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, recluse. Reclusive, एकांत प्रिय, someone who avoids other people's company is called reclusive. Rectify, सुधारना. Adjust or make right, correct, amend is called rectify. Rectilinear, सीधा. When something moves in a straight line is called rectilinear. Recurrent, बारंबार होने वाला. Happening repeatedly is called recurrent. Red tapeism, लाल फीताशाही, a process involving too much official formality is called red tapeism. 1990 के जो सुधार हुए थे इकोनॉमिक, तो उससे पहले ना इंडिया में बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म था, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती थी अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है, कोई भी स्टार्टअप लॉन्च करना है तो. ठीक है, तो याद रखना रेड टेपिज्म मीन्स अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी. रिडंडेंट, अनावश्यक. That which is no longer useful is called redundant. Referendum, जनमत संग्रह.
An act when people vote in order to make decision about a particular subject or policy rather than voting for a person. Next is reflex, अनैच्छिक क्रिया. An involuntary action under a stimulus is described is called reflex. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गर्म चीज़ है जिस पे आपका हाथ लग जाता है तो आप तुरंत हाथ पीछे कर लेते हो, तो वो हमारे इच्छा से नहीं होता, वो पहले से ही हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. रिफॉर्म्स, संशोधनवाद. द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस इज कॉल्ड रिफॉर्म्स. रिफ्यूजी, शरणार्थी, a person who has been forced to leave his country home because there is a war or political, religious or social reasons is called refugee. जैसे आजकल रोहिंग्या रिफ्यूजीज का बात की बात हमेशा न्यूज़ में रहती है, क्योंकि म्यांमार में जो है पॉलिटिकल चीज़ें ठीक नहीं है, तो उस तरह से याद रखेंगे हम. रिगेलिया, राज चिन्ह, पदवी चिन्ह या पदक. Dress with medals, ribbons worn at official ceremony or symbol of royalty is called regalia. Regicide, Rajhatya. The murder of king is called regicide. Rehabilitate, पूर्व दशा में लाना. Restore someone to health or normal life after imprisonment, addiction or illness is called rehabilitate. Rejuvenate, फिर से जवान बना देना. यंगर लुकिंग स्किन. अगर आपने देखा हो जो फेयरनेस क्रीम्स के ऐड आते हैं तो उसमें ये वर्ड काफ़ी यूज होता है. रिलैप्स, पूर्व दशा में आ जाना. फॉल बैक और सिंक अगेन इनटू अ वर्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट. तो फॉल बैक और सिंक अगेन मीन्स रिलैप्स, पूर्व दशा में आ जाना. रेलिक, अवशेष, a deceased holy person's remains or belonging kept for reverence or something belonging to or surviving from an earlier period is called relic. Relic, like for example, बुद्ध, भगवान बुद्ध के अवशेष, तो उनके जैसे उनके टीथ हैं, उनके हेयर हैं, तो वो रखे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड relic. Reluctant, अनिच्छुक. He was not willing to attend the technical session of the conference is called reluctant. Remand, jail वापसी. Send back a criminal into custody for further investigation is called remand. Reminded, याद दिला दिया. To brought back to mind. Reminiscence means संस्मरण. The act of recalling past experiences, events, or memories, often with a sense of nostalgia, is called reminiscence. Next is remorse, paschatap. Having a feeling of guilt is called remorse. Next is remuneration, parishramik. Amount paid to a man for his labor is called remuneration. Next is rendition, prastutikaran. Artistic, musical, or dramatic interpretation is called rendition. Next is renegade, pakhandi. One who deserts his principles or party, who called renegade. Renovate, नवीनीकरण करना. Restore something to better condition, like घर को renovate करवाना. Repartition, स्वदेश लौटना. The return of someone to his own country is called repartition. Repentance, पछतावा. Atonement for one's sin. Sin means पाप. Replenish, फिर से भरना. Fill up again is called replenish. Next is replica, नकल. An exact or a very close copy of something is called replica. Reprieve, दंड विराम. Postponing or remitting punishment is called reprieve. Reptiles, सरीसृप, रेंगने वाले जंतु. Vertebrate animals that crawl on the ground is called reptiles. Repulsive, घिनौना. Causing a strong dislike is called repulsive.
रिजर्व्ड, अमिलनसार या संकोची, someone who is silent or uncommunicative in speech is called reserved. Reservoir, जलाशय, a large natural or artificial lake used as a source of water supply is called reservoir. Next is resilient, lachila, to become a strong person in spite of many difficulties is called resilient. Respiration, श्वसन, the process by means of which plants and animals breathe is called respiration. Respite, मोहलत देना या दंड स्थगन is called respite. Postponement or delay permitted in the suffering of a penalty or the discharge of an obligation is called respite. Retaliate, बदला लेना. Return the same sort of attack, give tit for tat is called retaliate. Reticent, अल्पभाषी, a person very reserved in speech is called reticent. Next is retrace, दोहराना. Go back over the same route that one has just taken is called retrace. Retreat, पीछे हटना. Withdraw from a forward position in battle is called retreat. Retrospection, पश्चावलोकन, action of reviewing past event in one's life is called retrospection. Revamp, मरम्मत करना. To renovate or improve is called revamp. Reveille, जागने का बिगुल, a tune that is played to wake soldiers in the morning is called reveille. Reveal, आनंद लेना. A great pleasure is called reveal. Reverent, श्रद्धापूर्ण ढंग से, feeling or showing deep and solemn respect is called reverent. Revere, दीवा स्वप्न या उधेड़ बुन is called revere. A state of absent-minded daydreaming is called revere. Next is revile, गाली देना. Criticize in an abusive or angrily insulting manner is called revile. Rhetoric, वाक्पटुता या शब्दाडंबर, meaningless language with an exaggerated style intended to impress, or the art of effective and persuasive speaking or writing is called rhetoric. Next is rhinologist, नाक के रोगों का विशेषज्ञ. A specialist in diseases of the nose is called rhinologist. Next is Richter, भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना या यंत्र is called Richter. Scale used for measuring the strength of an earthquake. Ridicule, उपहास, full of criticism and mockery is called ridicule. Next is rigid, दृढ़ या कठोर, one who has fixed opinions and beliefs or hard and difficult to bend, यानी कि जो मुड़ने में बहुत मुश्किल हो, that is called rigid. Rites, रीति रिवाज, धार्मिक संस्कार is called rites. Solemn religious acts is known as rites. Rotunda, गोल घर, circular building or hall with a dome is called rotunda, like this type. Runs, खंडर, the broken part of object found in an ancient site is called runs. तो इस तरह हमारे 1500 OWS हो गए कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में हम 1501 से 1600 तक कंप्लीट करेंगे और विद इन 2 और 3 वीडियोस हमारे OWS फिनिश हो जाएंगे. इफ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe and share and don't forget to smile. Okay, bye bye.